Hello everyone, Namaskar. Welcome to Supergrads IPM, and in this session we'll be discussing an important aspect and one last stone to be turned to be there in your dream college, that is IMK. So what I mean by saying dream college, right? Dream college का मतलब है कि यार किसी ना किसी IIM में अपने को जाना है और वहाँ का जो बैचलर्स है उसका लुत्फ उठाना है, उससे सीखना है, उससे आ, खुद को ग्रो करना है, वो सारी चीजें. So obviously this is one of your dream college, and yet you have a chance one more month, or I should say there are 4 weeks to turn this last stone which is yet unturned. So let's proceed with 30 days roadmap to IMK by me, that is Mayur Mishra. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ प्लान ओवरव्यू कि भाई प्लान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. अगर 30 डेज ओवरव्यू की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, क्या क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए. देन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, किस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके की प्रैक्टिस करनी है वो देखना पड़ेगा. देन रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम है, वेदर आई शुड फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस और रिवीजन, तो वो देखना पड़ेगा. Then sectional test, and finally your mocks, because here we don't have PYQs. More or less you will get one sample paper. अभी वो भी confirm नहीं है देंगे नहीं देंगे, but देंगे obviously. तो whenever they conduct some entrances they will give you a sample paper. So let's distribute this on the basis of what they have stated. We had interaction with the director of the program, and he what he has said is here on the screen, that it will be a CBT, that is computer based test, and you will have two sections, quantitative ability, and they have mentioned till class 10th इसके बारे में अपन बात करेंगे, and then is your verbal ability. And next thing is LRDI can come means it is similar to IPMAT की lines. कि IPMAT में जैसे होता है ना, DI के सेट्स आ गए, एक लॉजिक बेस्ड आ गया, एक एनालिटिक बेस्ड आ गया या डेटा बेस्ड आ गया, तो वो, and it is going to be a 2 hour test and 90 questions, and the decision is yet to be taken on the number of questions and the marking scheme, whether it will be +4 -1 or it will be +3 -1. So it is yet to be decided, but this is the overall look and feel of the things which will be there in the examination. Next is what all subject distribution they have mentioned on the website. This is just the snippet from their website itself. If you will explore the website, you will get it. Key verbal ability, mein they have mentioned grammar, vocabulary, and reading comprehension. A specific mention of vocabulary says a lot about the examination, that vocabulary is an important section, grammar is an important section, and then reading comprehension. Obviously, any of the MBA entrances cannot be conducted without diving into this part, which is reading comprehension. And if we talk about quantitative ability, then number system, algebra, geometry, basic coordinate geometry, trigonometry, mensuration, statistics, and probability. So these are the topics. Where is arithmetic? So they have not mentioned it on their website, but you have to be prepared. और वो तो ऑलरेडी आपने बहुत प्रिपरेशन की है. ऑब्वियसली इट इज नॉट ऑल ऑफ अ सडन यू गेट द क्लू कि IMK अप्लाई करना है. यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर IPMAT इंदौर और एनी ऑफ द IPMATs. तो अरिथमेटिक तो मोर और लेस पॉलिश है ही, पर फिर भी उसके रिवीजन की भी तैयारी करनी है. यू कैन नॉट गो एंड से कि आपने तो बोला था अरिथमेटिक नहीं आएगी पर आ गई, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते. तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट पार्ट एज वेल. एंड देन moving further, we have the next thing, that is the complete roadmap of the session. The roadmap says that there are 30 days, or I should break it into 4 weeks. You will have only 4 weeks, and you will have Quant 1, Quant 2. Then I have divided VRC into two parts, VRC 1 and VRC 2. And then you have the testing. So, how are you going to test your practice? So, let's begin with week 1. So, in week 1, the first thing is to understand this table. Here, green indicates it is done, and yellow indicates this part is a backlog. I have to do it in some other day.
So you can use this color coding and can make the timetable accordingly. The first thing to be focused is number system, a comprehensive preparation of the chapter number system, because they have mentioned the chapter name number system. So you have to prepare all the ins and out of the number system. And how to prepare? The best way is to revise all the IPMAT notes which you have prepared for the chapter number system. Then you can also go and check few questions section wise, that is number system based question from CAT also, because number system can range from CAT to IPMAT. It's not something has got कि अरे IPMAT में है तो आसान पूछेंगे और CAT में तो difficult पूछेंगे और vice versa. No. So you have to be well equipped with all the knowledge of this chapter, and then there comes the next chapter, that is base system, which is a complementary part in the number system, because this is a chapter which opens up so many things, so many complicated questions if you don't have the understanding of base system. And if you understand base system, then you will deal with those questions very easily and very I should say very to the point, without wasting much time. Then if I talk about word VRC, then first thing you should do is word power made easy. Take out your word power made easy, start revising your vocabulary, because vocabulary is something they have mentioned specifically. तो उस पे हमारा एक अलग से फोकस होना चाहिए. तो फर्स्ट वीक में we are planning to complete number system, base system, vocabulary, and then RC and developing focus reading. Here there is a catch, because IIM Kozhikode uh, is making the paper for the first time, and they made the CAT paper in 2015. So 2015 के papers उस time पे आंसर की वाला सिस्टम नहीं था कि रिलीज होगा एंड ऑल. तो वी डोंट हैव दैट एक्चुअल पेपर. कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट आरसीज शायद नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी अवेलेबल एक्चुअल आरसीज जो आए हों, क्योंकि पेपर रिलीज नहीं होता था. बट लेंथ ऑफ द आरसीज may range from IPMAT to CAT, क्योंकि there are only two sections. So you have to be prepared on the part that RCs can be difficult, can be difficult. They will not be just like IPMAT. The length is not that small. See, in this year IPMAT examination also this has happened. The length has increased. So be prepared for any type of surprise, so that you are not surprised during the examination. You would be like, I have already prepared. And the best source will be to revise all the PYQs of your IPMAT, and then to a few RCs from CAT PYQs also. That will be the best source to serve you understand the basics, that where the examination will come from. What is the examination looking for in an RC, in a RC? Then, obviously, in the first week, let's keep it light, that you have to give one full length test. Why I'm telling you to give full length test? Because you are already done with the whole syllabus for other examinations. And then topic test should be done. Number system का टेस्ट देना है, बेस सिस्टम का टेस्ट देना है, आरसीज में स्पेसिफिक जो डोमेन के आरसीज आप कर चुके हो उनका टेस्ट देना है. Then you will start with next week. In the next week, focus on algebra. Algebra means क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है. फंक्शंस, स्टेट थ्योरी एंड एवरीथिंग व्हाट एवर कम्स इन अलजेब्रा, वो सारा का सारा आपको आना ही चाहिए. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, आई शुड से, लीनियर इक्वेशंस, then special equations, and then quadratic equation. So from linear equation till function and graph, you should be aware about each and every topic. And what you need to do? You need to just practice the solved questions. जो already कर चुके हो वही solve करना है. तो ये सोच के नहीं डरना है कि यार सर ने बोला है कि डिफिकल्ट आने वाला है. नहीं, पेपर उनके लिए डिफिकल्ट होगा जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे. अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो आईपीमैट के पेपर्स पे जाके, आईपीमैट लेवल की तैयारी करके जाना है. डोंट अंडर एस्टिमेट, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड टिल क्लास 10th. तो कैट में भी टिल क्लास 10th बोलते हैं, बट पीएनसी प्रोबेबिलिटी भी आता है, लॉगरिदम भी आता है. तो बोलने से कुछ नहीं होता. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन each and every parameter, so that you don't leave a single chance to be there inside the college, inside the campus. Next thing is
comprehensive revision of LRDI. So in the second week, first week we have dedicated with number system. We are done with the foremost, the first topic they have mentioned on their website. और उसके बाद LRDI का comprehensive revision करना है. जितनी भी logical reasoning, जितना भी data interpretation आप solve कर सकते हो. Previous, again, the source should be previous year papers of IPMAT, any of the IPMATs, and then basics of LRDI. You should work on it. ठीक है. और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन अपने को सेकेंड वीक में करके रख लेना है. अब उन्होंने मेंशन तो नहीं किया है, बट ये क्वांट सेक्शन में आ सकता है, तो यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद दिस. एंड नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथनिंग योर वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन द सेकेंड वीक. ऑब्वियसली यू आर डन विद वोकैबुलरी. फर्स्ट वीक में बहुत मेहनत कर ली है, बट उसको स्ट्रेंथन करना है. हाउ टू स्ट्रेंथन इट? लर्न इट, some other methods, methodologies, expand your horizon of vocabulary what you have learned in the first week, and then obviously parallelly you have to work on the grammar. तो ग्रामर के क्वेश्चंस जैसे कि रोहतक में आते हैं, बाकी एग्जाम्स में आते हैं, है ना, वो सारे हमें प्रिपेयर्ड होने चाहिए. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द इजीएस्ट एग्जामिनेशन एज वेल एज द डिफिकल्ट मोस्ट एग्जामिनेशन, रेंजिंग फ्रॉम IPMAT इंदौर टू one of the easiest examination that you can appear while applying for the entrances. Okay. Then is diversified RC practice, that is RC spells social, political, legal, technical, psychological, all these parameters you have to be prepared, you have to be well versed. और हमें हर एंगल पे करना है. हम उस तरीके से नहीं सोचेंगे कि यार IPMAT है तो उतना लेंदी नहीं होगा, और या उतना डाइवर्स नहीं होगा, या उतना डिफिकल्ट नहीं होगा. यू हैव टू प्रिपेयर बिकॉज वोकैब इज, वर्बल इज समथिंग that can be easy for someone and can be difficult for someone at the same time. Quants can be decided कि this is a topic which is out of reach for most of the students, but verbal is your forte. How much you practice, that will be the level of expertise you can showcase during the examination. So you have to be prepared on all the parts. And again, I am repeating, solve the previous year questions of IPMAT. You have already done it. Solve it again. What I am saying? क्या बोल रहे हो सर? दोबारा करने से क्या फायदा होगा? फायदा दोबारा सॉल्व करो एंड रेफर टू फ्यू कैट सोर्सेज. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कैट भी हमें इसको पिक्चर में लेके आने हैं. देन नेक्स्ट थिंग इज whatever topics you are done with, like हमने क्वाड्रेटिक कर लिया उसका टॉपिक टेस्ट देंगे, देन मॉड्यूलस कर लिया उसका टॉपिक टेस्ट देंगे. अगेन आरसी में जो भी पर्टिकुलर जॉनरा हमने कवर कर लिया उसका टॉपिक टेस्ट देंगे. देन कोर सीआर प्रैक्टिस भी करनी है. यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग की कोर प्रैक्टिस मतलब पैसेज फॉर्म में, नॉट ओनली दी वन लाइनर स्टेटमेंट्स एज इट कम्स इन रोहतक और जिपमैट. नो, देयर कैन बी अ कॉम्प्रीहेंसिव सेट, मतलब कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है पूरा कि एक पैराग्राफ है, उसके बेसिस पे यू हैव टू ड्रॉ कंक्लूजंस, इन्फ्रेंसेस, अजम्पशंस और व्हाट नॉट, मतलब व्हाट ऑल थिंग्स कम्स इन दी क्रिटिकल रीजनिंग. सो दैट शुड बी प्रैक्टिस टू दी कोर. ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया क्योंकि मुझे पता ही है, मैंने जिपमैट की तैयारी की हुई है, रोहतक की तैयारी की हुई, वहां पे जिस लेवल का. नहीं नहीं नहीं, बी प्रिपेयर्ड ऑन द लेवल ऑफ कैट. और मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं नई चीज नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्या कैट की तैयारी, नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ कुछ फ्यू आरसीज, पिक फ्यू आरसीज. Everything is easily available on the internet. Pick few RCs which came from CR, few RCs which come in the segment of sociology or which came in the segment of economics or ecology. तो वैसे पिक कर करके स्पेसिफिक एक एक दो दो आरसी प्रैक्टिस करके रख लो. एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट. सेकेंड वीक में हमें 2 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं. तो फर्स्ट वीक का जो फुल लेंथ टेस्ट है वो थर्सडे या फ्राइडे को देंगे. नेक्स्ट वीक का पहला वाला ट्यूसडे को देंगे और दूसरा वाला अगेन फ्राइडे को देंगे. तो इससे हमें एनालिसिस के लिए टाइम और मार्जिन दोनों मिल जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. तो हमें पूरी ज्योमेट्री पूरी मेंसुरेशन कवर करनी है. भले ही उन्होंने 10 तक बोला, बट हमने जो भी IPMAT के लिए प्रिपेयर किया हुआ है वो सारा कुछ हमें रिवाइज करना है. देन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ढंग से प्रैक्टिस करनी है एंड ट्रिग्नोमेट्री भी ढंग से प्रैक्टिस करनी है भाई, बिकॉज इन दिस एग्जामिनेशन सी अरिथमेटिक बहुत ज्यादा नहीं है, तो प्योर मैथ्स के टॉपिक्स बहुत ज्यादा है. अगर नंबर सिस्टम को हटा दो तो बाकी सारे टॉपिक मैथ्स के ही है. ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, देन योर मॉडर्न मैथमेटिक्स, योर प्रोग्रेशन और सारी चीजें. सो यू हैव टू बी
वेल वर्स्ड विथ ऑल द टॉपिक, डर लगता है, तो एटलीस्ट practice 10 questions from each domain, each topic, each subject. Got it? Then revision of vocabulary and grammar. Again, मैंने पूरा एक slot हर वीक में दे रखा है रिवीजन ऑफ vocabulary and grammar के लिए, क्योंकि ये उन्होंने deliberately mention किया है. mention किया मतलब आएगा ही, तो you have to be prepared on this part. And then quick revision of para jumble, para summary, para completion. VA का कोई जिक्र नहीं है, बट एक क्विक रिवीजन, जैसे हम LRDI का यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करके जा रहे हैं, तो आई हैव केप्ट बीइंग सेफ. So there is no harm in preparing extra rather than you enter into the examination and you are not prepared. तो वो सब कुछ आपको प्रिपेयर करके जाना है. एंड अगेन कमिंग टू vocab, बी prepared on the fronts of confusables, then your idioms, phrases and everything, figures of, मतलब ग्रामर की बात करें तो फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब कुछ तैयार करके जाना है बहुत अच्छे से, धांसू तरीके से. और तैयार करने का द ओनली वे टू बी प्रिपेयर्ड इज टू प्रैक्टिस फ्रॉम द पीवाईक्यू. सारे पीवाईक्यू जो भी अवेलेबल है, बस उनके रिवीजन कर लो, उनको एक बार बिना देखे सॉल्व कर लो एंड यू विल बी देयर. एंड इन दिस वीक इज गोइंग टू बी हैवी. यहाँ पे आपको हर टॉपिक भी आप काफी ज्यादा कवर कर रहे हैं. एंड देन ऑब्वियसली पिछले वीक में भी किए थे, तो टॉपिक टेस्ट तो है ही, पर फुल लेंथ टेस्ट आपके 3 हैं. तो इस वीक में 3 फुल लेंथ टेस्ट देने. तो लास्ट वाला हमने फ्राइडे को दिया था, तो इस वीक में द टेस्ट विल बी ऑन मंडे, देन वेंसडे एंड देन सैटरडे. मंडे, वेंसडे एंड सैटरडे और संडे. लास्ट टेस्ट आप संडे को भी दे सकते हो. क्यों? क्योंकि वो आप लास्ट वीक के बारे में पढ़ोगे तब पता चलेगा. लास्ट वीक you should cover the modern maths progressions and everything जो भी बचा है, और मॉक में जितने रॉन्ग क्वेश्चन है वहां से आपको रिवीजन करना है. Then next thing is comprehensive time bound practice of the wrong questions. This is what I am telling to revise the section. आपको रिवीजन कैसे करना है उसका तरीका है कि भाई टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर लो जो क्वेश्चंस गलत हुए उनकी एक बार, तो डेफिनेटली आपका बहुत सारा कवरेज हो जाता है. देन VRC प्रैक्टिस, अगेन रॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ रिवीजन. एंड 360 डिग्री प्रैक्टिस, डिटेल नोट्स, रॉन्ग क्वेश्चन इन द मॉक, जो भी नोट्स है सब रिवाइज कर लो. सो फोर्थ वीक इज मोर और लेस अ रिवीजन अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स, जहाँ पे हमें कुछ 2-3 नए टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बाकी इज मोर और लेस द रिवीजन. एंड इन दिस up appear for all the topic tests whatever you are doing, then revise it through the sectionals because you have completed a comprehensive set, so you can combine the different sections and can appear for a sectional test and one full length test. लास्ट वीक में सिर्फ एक ही फुल लेंथ टेस्ट देना है, इसलिए लास्ट वाला संडे को दिया था. तो आप इस वीक में जब आप एंटर कर रहे हो, तो आपका जो फुल लेंथ टेस्ट है वो थर्सडे या फ्राइडे तक हो जाना चाहिए. थर्सडे मतलब एग्जाम से 3 दिन पहले आपको मॉक दे देना है. एग्जाम के जस्ट 1 दिन पहले नहीं देना है, 2 दिन पहले नहीं देना है. 2 दिन पहले दोगे तो जब एनालिसिस करोगे तब दुख होगा. 3 दिन पहले दोगे इज द सेफ टाइम. तो आप जब भी 3 दिन पहले एग्जामिनेशन दे रहे हो अगर, तो आपको उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद आपने एनालिसिस कर लिया. सपोज मान लो 22 को एग्जामिनेशन है, आपने 18 को एग्जाम दिया, 19 को एनालिसिस कर लिया, तो 20 और 21 आप उस गम से उभर सकते हो अगर कुछ, इफ समथिंग वेंट रॉन्ग. और अगर बहुत अच्छा गया तो उस ओवर कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो फेड अवे इन द मीन टाइम. तो आपको 2-3 दिन पहले एग्जाम दे लेना. 19 के बाद एग्जाम, मॉक एग्जाम नहीं देना. 19 तक एग्जाम दे लो, 19 के बाद 20-21 विल बी फुल फ्लजेड रिवीजन. गॉट इट? So this is all about the roadmap for your IMK BMS program. And if we move further, if you feel like yaar, I need a proper guidance, then Super Grades is always there to help you. You can join our batches. We have launched specific batches for IMK and IIM Bombay, IIM Bangalore DBE program plus IMK BMS program. Crash course batches hai, you can join it right away. You can read the offerings, what all offerings they have, and you can connect with us, or you can scan this QR code and connect with us on Telegram. So message us on Telegram if you want to connect, if you have any query, if you need any mentorship, any guidance.
Stay connected with Supergrads. And with this, I would like to say, have a nice day. Thank you. All the best. And definitely you will rock the paper.